नीचे से स्कैनर के ऊपर भी आ रही है, मैं को प्रोसेस में क्या रोल तो गई। आइटम नंबर क्या है? मैडम वो प्रोसेस में अरे आने दीजिए ना, फिर ले लेंगे, आपको चिंता कुछ नहीं। 118 आज नहीं चला काय के लिए सर प्रोवाइड अभी बैठ जाइए, अब देखते यस तो बन तो मैं आइटम नंबर 110 सर बिफोर प्रोसीड इसमें 4 पिटीशंस हैं, टोटल मेरी जो पिटीशंस है 92 पिटीशंस हैं, उसमें 4 have filed the application for withdrawal of petition. 4 item number 17997 just give the list for withdrawal. Yeah, these are the 4 matters. This is the withdrawal. That is solicitor general is there. 110.12. You want to withdraw that application? Okay, I number. Yes, sir. I have filed certain videos actually for that particular incident. Video of that particular incident. Exam was 4 तारीख को different centers के petitions के कुछ videos थे. Just to see the impact, actually क्या impact हुआ था examination. I have filed this CCTV, the pen drive also. I have supplied the copy also. I have on my tab actually. Okay, क्या? You have the copy. Yes, I have supplied the copy. I would request, let the matter start. The lordships may hear, we also have examined several things. But CCTV, etc., may not really assist the court. CCTV is the main evidence actually, because that exam was conducted in the examination hall, and they have a provision there. They have mentioned in the instructions that they will conduct a CCTV. So that is okay. The CCTV that is mentioned in the instructions also. The CCTV which you are doing is on that particular date only. On that particular date of examination. But that was taken outside actually, and that was between because at particular side the examination center. Can I have 2 minutes? Can I have 2 minutes before that? Yes. Because this is happening every time. It starts with something totally new thing. Not total. No, he has said that he has always furnished you to the copy of the CCTV footage. I'm not on CCTV. I'm slightly on a different point. In the entire country, total 22.9 lakh students appeared. So far as your lordships are concerned, my lords are concerned with not Indor. Indor has 49 examination centers. Correct, Manoj? 49 examination centers out of total 5,466. Nationwide, it is 5,466 centers. Indor has 49 centers. Out of 49 centers, only 18 centers, there was light disturbance. Light disturbance means there was no electricity. The total number of candidates in Indor are 27,264 candidates. I hope I'm able to make myself clear. Out of which, 75 are before your lordship. We do not know which center this CCTV belongs. We do not know what is the position, whether it is belonging to any particular center or somewhere or whatever. But what we did was taking it not as an adversarial litigation, but we constituted a committee of 3 neutral experts. And I would wish to show to your lordships the result which they have got. That out of one interesting fact your lordships would notice that 11 candidates from these affected centers have scored more than 600 marks, which is top 100. The total people, students who have scored nationally more than 600 are 1,300, out of which 11 are from affected students. Number one. Number two, the average of entire Indor, where there was, not including schools where there was no electricity or there was electricity
out of 109, out of total 170 questions, the average is 119 to 127 questions attempted. That average has remained constant. So we will give those figures to look at some CCTV from somewhere and arrive at a conclusion would be a little hazardous. That's what I'm saying. So let him argue on the facts first, on affidavits. We will also place the facts and affidavit to show that what can be the contours within which the court would like to intervene. And thereafter, of course, it's for your lordships to see the CCTV. But to start with some random CCTV and say that... No, it is not like that. He has his own anxiety. No. Therefore, I am not taking it in an... And I am also not deciding it only on the basis of the CCTV footage. No, I understand. But I am not taking this as an adversarial matter. But let there be some structured assistance to your lordships. Yes, of course. What are the facts? Yes. What are the number of centers, total centers, affected centers? Yes. What is the findings of the committee, etc. Yes. That's my request. My submission is here. Examination was conducted in Indor for 49 centers. 49 centers, they have mentioned in their reply that there were 24 affected centers. इसमें the statement I have given of the collector का जो statement था, he has also admitted. ये कहना है कि हमने power supply के लिए we have issued the specific guidelines. और इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होकर उसकी रिपोर्ट भी सबमिट करने के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे. और कलेक्टर का जो स्टेटमेंट है ऑन दैट पर्टिकुलर डे इज टेलिंग के देयर वाज नो इंस्ट्रक्शन फॉर पावर अरेंजमेंट. फर्दर वी विल मैनेज द अरेंजमेंट. वी विल आस्क फॉर द फंड आल्सो. ये पूरा स्टेटमेंट में आया हो. योर हाउ मेनी पिटिशंस आर हियर राइट नाउ? माय मतलब इट्स मोर देन 100. आई थिंक 92 आई हैव फाइल्ड एंड देयर आर अदर पिटिशंस. एंड हाउ मेनी सेंटर्स आर इन्वॉल्वड? 24 सेंटर्स. अब कुछ सेंटर्स में जो बच्चों ने कंप्लेंट किया है, मतलब जो अफेक्टेड सेंटर्स में उनकी रिपोर्ट में आया दैट इज 24 अफेक्टेड सेंटर. It was 24 written earlier. But only total 18 are affected. There are 6 petitioners from Ujjain. 6 petitioners from Ujjain. Ujjain also, yeah, they are from 2 centers. Almost 24 centers from Indor and 2 from Ujjain. 2 from Ujjain. This may not be the correct statement because let him complete whatever he wants. Yes, और कुछ कहना है आपको? So इसमें मेरा ही कहना है सर, इन्होंने जो reply फाइल किया है, yes, kindly see the R13 point number 1. Number 110. इसमें इनका जो main record है, sorry. First of all, in support of your contention that there was some power disruption, what document have you filed? I have submitted the information received through RTI. Regarding that, RTI we have submitted with the IA. We have submitted the denial also, and we have submitted the RTI also. Where is your this information obtained from the department? They have also admitted, sir. They have also admitted. Power cut, they have also admitted. So there is no dispute regarding that power. You have filed it or not? No, I have filed, sir. I have filed. I filed on 9th June 2025. You have filed it subsequently? Yes, sir. I number? I number. I filed on 9th of June. डेट कहाँ मिलेगी? It's a denial. Denial. Then उसके बाद में second जो है information regarding power cut received from RTI. Through RTI. Serial number, which serial number? Page number 4 to 9. अरे भाई कहाँ मिलेगा? ERP में कौन सा serial number था?
That is 30. 30. Document number 816. Denial to the report submitted. Denial, and second point is information regarding power cut received from MPB through RTI. Page number 4 to 9. 4 to 9. तेज आंधी तूफान के कारण वृक्ष की शाखा गिरने से कारण बंद होने का टाइम और दिया टाइम को बंद होने का समय और चालू होने का जी एंड व्हाट वाज द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 2 to 5 and during the exam the power cut was there 2 to 5 yes and during that time only this disruption occurred on that particular time from 2 to 3 there was a power cut ठीक है और क्या कहना है आपका इसमें they have submitted the reply I have submitted the denial also I have submitted the rejoinder also kindly see the point number examination के लिए सब मेरा ये कहना है कि they have charged 1700 from each candidate for general category for PWS they have charged 1600 and for other categories they have charged some certain amount when you are charging the equal amount you have to provide uniform facilities and uniform facilities to all the students but they are failed actually they are telling कि हमने power arrangement का we have issued the direction in writing also but collector का statement भी even their reply in their reply also जो first इनका reply आया था उसमें जो ऑब्जर्वर जो है उन्होंने खुद उसमें एडमिट किया पेज नंबर 30 31 ऑफ रिप्लाई जो फर्स्ट रिप्लाई इनका है कि देयर वाज नो पावर बैकअप फैसिलिटी वाज देयर एंड द विजिबिलिटी वाज आल्सो लो I have requested the visibility report from the environment department also but it's taking time the visibility on that particular day was poor I think the general visibility would be it's measured in meters I think तो 6 मीटर जनरली होता है बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे इट वाज 4 और जो एग्जामिनेशन का 4 से 5 का समय था उसमें तो 3 और 1 तक आ गया तो इनका जो कहना है कि संजय आपका ऐसा कहना है बट इज देयर एनीथिंग ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट दिस वाज द विजिबिलिटी तो सर इनके ऑब्जर्वर ने खुद इसमें एडमिट किया हां एडमिट किया और इनका कहना था पेज नंबर 15 ऑफ रिप्लाई कि कमिटी वाज डायरेक्टेड टू कंडक्ट फिजिकल ऑडिट of all centers and report to be uploaded on a given link. Physical verification होता था एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे पावर नहीं था वो कैसे सर इन्होंने सिलेक्ट करी है इनके डायरेक्शन थे कि देयर शुड बी मतलब अनइंटरप्टेड पावर वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी और उसके लिए पावर कट नहीं होना चाहिए उसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करना था ये रिपोर्ट सबमिट करना था इनके जितने सेंटर्स पे पावर बैकअप नहीं था वहां पे इन्होंने अपने रिपोर्ट में ये मेंशन किया है कि देयर वाज प्रॉपर वेंटिलेशन देयर वाज प्रॉपर नेचुरल लाइट एक्चुअल सिनेरियो ये था सर बारिश आ रही थी जो खिड़की चालू थी खिड़की भी बंद करनी पड़ी क्योंकि ओएमआर शीट गिली हो रही और जब बाहर इतना डार्कनेस था अभी वीडियोस देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड की सिनेरियो ऑन दैट पर्टिकुलर डे इतना तेज बारिश और आंधी तूफान था कि वहां पे खिड़की भी चालू नहीं कर पा रहे तो कैसे नेचुरल लाइट इनकी अवेलेबल हो सकती है ऑन दैट पर्टिकुलर कौन सा सेंटर हमने सीसीटीवी फुटेज की डिमांड करी कि आप सीसीटीवी फुटेज आपने रिकॉर्ड किया मैंने वो डॉक्यूमेंट पेश किया है कि हमने स्टूडेंट्स को बोला था कि कोई भी जो है आप यू विल बी अंडर सर्विलेंस तो आपका सीसीटीवी फुटेज आपका जो है रिकॉर्डिंग आपका वहां का हुआ तो आप सेंटर्स का रिकॉर्डिंग कर दो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सिचुएशन उस पर उन्होंने आज तक कोई रिप्लाई नहीं है तो रिकॉर्डिंग कहाँ से होता है रिकॉर्डिंग का प्रोविजन है सर उन्होंने मेंशन किया उसमें क्या इनके इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड है उसमें उन्होंने मेंशन किया मतलब ईच फ्लैट वुड हैव सीसीटीवी कैमरा हाँ वेयर इज दैट in absence of electricity, the CCTV camera also does not Annexure P11, sir. Annexure P11. So, there is a backup, then it would work, but for that reason, electricity would also work. But backup electricity would also work. I have the figures. In how many centers there was a backup also? No, he's saying that there is actually a condition precedent that there should be a camera and the backup. Yes. Yeah, yes, sir. अगर था कहाँ है वो condition? Yes, sir. Is Annexure P11? C11. Annexure P11 से जो submitted on 28 part. इसमें मैं application से वो मांगा था सीसीटीवी फुटेज मांगा था उसमें पेज नंबर 4 पे I have submitted the clause number 60 important instructions for candidate should adopt any means. हाँ सर, no candidate should adopt any unfair means or indulge in any unfair examination practice as the examination centers are under surveillance of CCTV and equipped with jammers. As the examination centers are under surveillance of CCTV and equipped with jammers. It means that आपका internally जो है CCTV was installed. No, but it is not a condition. It was a specific condition. आर्क में उन्होंने
स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन किया था कि भाई आप कोई नकल वकल नहीं करेंगे, अदरवाइज सर हमने रिकॉर्डिंग किया था बच्चों का, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन किया है ना, उसको बच्चों का रिकॉर्डिंग भी किया है कि वही बच्चा है, क्योंकि चेंज हो जाता है ना सर, हाँ रूल सॉल्वर आता है, इस वजह से उन्होंने रिकॉर्डिंग किया। ठीक, और इनके ऑब्जर्वर का ही खुद का जो पेज नंबर 30 और 31 है रिप्लाई का, उसमें दे हैव एडमिटेड कि देयर वाज नो पावर बैकअप। तो आप कैसे फॉल्स स्टेटमेंट, आप एफिडेविट तो दे रहे हैं और उसके बाद में आपने जब सेकंड रिप्लाई फाइल किया उसमें आपने ऑब्जर्वर को हटा के डायरेक्टली सेंटर्स को एक फॉर्मेट भेजा, और एक आप जितने ऑब्जर्वर की इनके जो सेंटर्स की रिपोर्ट आएगी सब मतलब वर्ड टू वर्ड मैच कर, केवल एक फॉर्मेट दे दिया उनको और उसमें उन्होंने रिप्लाई कर दिया। ऑब्जर्वर आपके खुद एडमिट कर रहे हैं कि आपके पास फॉर्मेट बैकअप नहीं था, आपके पास में पूरा विजिबिलिटी थी, फिर उसके बाद में डिस्प्यूट क्वेश्चन कहाँ से गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं सर, उसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट उसका भी पर्टिकुलर मैंने डिनायल सबमिट किया कि केवल आप असेसमेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन से नहीं कर सकते, क्योंकि एक्यूरेसी वर्सेस मतलब अपना अपीयरेंस वर्सेस वो नहीं होता है, आपका एक्यूरेटी नहीं होती। बच्चों को एक्यूरेट इसमें एक एक मार्क्स का मतलब 180 क्वेश्चन थे, 3 घंटे में उनको अटेम्प्ट करना, तो एवरी सेकंड वाज प्रीशियस, और बच्चे अंडर डिप्रेशन अंडर स्ट्रेस थे, तो उन्होंने जल्दबाजी में कुछ भी अटेम्प्ट करके कर दिया, उसको वी कैन नॉट कंसीडर कि उन्होंने अटेम्प्ट किया तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री एग्जामिनेशन। और प्रीवियसली आल्सो सुप्रीम कोर्ट में पहले जो इंटर 2024 में हुआ, देयर आल्सो दे हैव कंडक्टेड री एग्जामिनेशन, वहां मैटर वाज रिलेटेड टू पेपर लीक व्हिच स्टेट्स हैं, बट दे हैव कंडक्टेड री एग्जामिनेशन। भोपाल का जज में and Supreme Court only has stated that even 0.1% negligence is there. And said WP Civil 368-2024. Or we have to perform it. Yes, sir. ये फाइनल यूज करना। That was as per committee's report. This time committee has report otherwise. Okay. I'm not being adversarial, I'm just factually correct. That is the issue of that's usually also reflected by 80 years. If you want to 24 hours, 25, without any committee, I have to correct it's not without Sir, committee was not an independent committee. Committee was formed by the NT only. आप ही गलती कर रहे हैं, आप ही असेसमेंट कर रहे हैं. That was not an independent body. उनको आपने TAD और सारे अलाउंसेस उसमें लिखा हुआ है कि यू विल पे, तो वो आपके अगेंस्ट में कैसे रिपोर्ट देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, तो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर वगैरह IIT प्रोफेसर, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया सर। एक्सेप्टेंस का जो मतलब आपका जो क्वेश्चन ऑफ मार्क्स अटेम्प्टेड है, वो that will not be a factor. That cannot be a rule. That because a student is preparing for IITs. कुछ लोग 3 साल, कुछ लोग 4 साल, कुछ लोग 5 साल से अटेम्प्ट कर रहे हैं सर। 1 साल का फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट देखें, और बच्चों ने मतलब कंसर्निंग गवर्नमेंट एजेंसी तो हमको इतना सब करना पड़ रहा है। प्राइवेट एजेंसी होती है, दे आर चार्जिंग समथिंग, दे हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज इक्विवेलेंट टू दैट अमाउंट। आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? चलिए ठीक है, एनीथिंग एल्स? हाँ, in the PT kids, as per the commenting of the comments, that only 2 students have come to the on course. From the stated that if one student is there, then the student will hear the matter. But what is the position of the position? तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, अगर एक का भी होता है तो anybody who is talking also putting down is bringing the dispute on the court notice that there was some problem with the conducting of examination. This started 2 o'clock in the and the water and the light went down. They have stated this that there was as either a full reply as there was power outage here at the but they only stated that there was a natural light. Or this is the even in some report they mentioned it's a good report there is a natural light in the window. But if woman light goes, the conditions you understand how to keep. Reading is because the questions are ending. If the admit of the question was ended, there were 180 questions we have to attend. The students who are preparing, they have to read it and then answer it. The circle. Those who are sitting, those were sitting near the windows, they were covered because of the water. Those who are sitting in center, they were not light. As there was no torch, there was no mobile available as per the media support. So the condition was not different. So attending, so the student has the condition over here. He is practicing that I have to attempt. So in anyhow, when initially they were told that there will be nothing done, so they have to attempt. So there is no choice to them to except for attempting. If they have not attempted, then they would have said they could have attempted even. So attempting is the only choice that she was given. So they were not aware that they could have done this. They could appear to the court and they could file. This is not a something.
First, student is thinking that I have to appear at my career and my life is depending on us. A dropout is a pressure is everybody who is appearing for NEET is has a dream to become a doctor. To conduct this act, this what last year NEET teaching the manner of the judgment. On the or those who negligence is there. In any manner that has to be considered. सर इनका रिप्लाई में कहना है कि बच्चों ने उस समय वॉइस रेज नहीं किया। मेरा माइनर से तुमने निवेदन एक बार सर वीडियो दे दी, आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगा क्या उन्होंने किया था वहाँ, क्या कलेक्टर का स्टेटमेंट था, क्या एनवायरनमेंट था आउटसाइड दी, और इवन एक सेंटर पे तो उन्होंने अंदर जाके फुटेज दिया हुआ है, तो उसमें पूरा अंदर डार्कनेस हो रहा है। मेरा कहना था एवरेज ये है एक तो इनके खुद के साथ जो प्रोटोकॉल थे एंटी फेल टू If my learned friend can just point out CCTV is from which sector and which room. जो आए अवेलेबल हुए, क्योंकि उस समय को ऐसा बच्चे मतलब 17-18 साल के सर एवरेज एज के बच्चे या नॉट क्रिमिनल, इस तरह से माइंडसेट नहीं था उनका कि हमको इस तरह से करना। अरे नहीं वो पूछ रहा है उतना जनरल सर, ये जनरल जो तो उनके पास में जो वीडियो आया तो मुझे एक के एफिडेविट के साथ if there is no electricity, there would not be any CCTV. Maybe there is some CCTV from outside. Camera video taken from radio, but they can't carry the more mobiles also inside. ये मोबाइल का जो वो है वीडियो फुटेज है वो कहाँ का है और कौन सी क्लास का लिया? ये क्लास में मोबाइल नहीं ले जा सकते। I don't think it can be. Mr. Mehta just hold on. It's an empty classroom of which he has taken the video. So I'm asking you him from where he has obtained it. सेंट्रल स्कूल के केंद्रीय विद्यालय बाहर का है सर, और सेंट्रल स्कूल के बाहर का। कितने बजे का है ये उसी समय सर 2 से 5। तो ये क्लास मतलब वो क्लास होने के बाद से लिया है, बात का लिया है। बाहर का है सर, बाहर का नहीं, एक तो अंदर का है ना, एक अंदर का ये बाद में लिया सर, एग्जाम अंदर का बाद में लिया है। हाँ, एक पेरेंट अंदर चले गए तो उन्होंने वहां से अंदर से लिया। दो मिनट वेट कर लीजिए, फिर सारा बता देंगे क्या हुआ है। हो सकता है रात में किया, उसके बाद के बाद सर सुबह से एग्जाम होने के बाद नोबडी विल बी, उसके बाद लाइट आ गई फिर दैट इज इट इज सपोर्टेड बाय द न्यूज़पेपर क्रिएटिंग लेक्चर्स आई डिड द पिटीशन इसको मैंने प्रोवाइड द बोर्ड। उन्होंने कलेक्टर का सर जितना उसने न्यूज़ उन्होंने एडमिट किया है कि देयर वाज नो डायरेक्शन रिलेटेड टू पावर रनिंग। और ये पेरेंट्स वगैरह दिख रहे हैं पुलिस वालों के साथ में, वो क्या बता रहे हैं? सब पुलिस वालों से ही, पुलिस वालों से जब इन्होंने आर्गुमेंट करा के तेरी प्रॉब्लम आ रही तो पुलिस वालों ने उनको धमकी दी गाड़ी में डाल दो। ये वहां की सिचुएशन की ये वीडियो है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर इंदौर जी। टीआई वहां पे प्रेजेंट है, टीआई कह रहे हैं एसडीएम लेवल का आदमी प्रेजेंट है, टीआई लेवल का आदमी प्रेजेंट है, फालतू बात करो चलो गाड़ी में डालो। ये तो ट्रीटमेंट था। और ये कौन सा है जो बच्चे हैं और बच्चे वहाँ पे उसी से वो शायद केंद्रीय विद्यालय का ही होता है यहाँ पे कम्प्लीटली जो है उसी समय का है। हाँ, और इसके बाद में सर कलेक्टर है इशू की डायरेक्शन, मतलब उसके बाद में जितने भी सरकारी स्कूल थे और सब जहाँ पे डीजी सेट या जनरेट पावर बैकअप नहीं था वहाँ पे उन्होंने दे हैव इंस्टॉल्ड द डीजीज एंड अदर अरेंजमेंट्स आफ्टर दिस इंसिडेंट। ठीक, बाद में ये देखिए
My state is not listing the bunch, and my application result is declared. Even though the application for adopting reply was filed on 2025. But your result has been declared. The information, unity information was whatever the Indian value to all the other results we granted. I think item number 89 also. ठीक है 88 and 99 ये आप लोगों का हो गया what else you wanted just for the normal good declares In case if they don't have power, it is because please for record already filed this petition. 2025 NEET as it's 2024 NEET and 2024 Four of them are on their own basis. One of them is on Indor recommendation. RBI, the contestant did not have a power with. So one more submission is there. Actually, lastly the order था that was only to the affected centers. There was मतलब the stay was only to the affected center. Result was not declared of the affected center only. उसके बाद में फिर वो जो next order हुआ 9th of June को उसमें वो केवल petitioners के लिए restrict हो गया. Actually क्या हुआ काफी सारे petitioners हमने Google form भी create किया. There are a lot of petitioners from the affected centers those who have not approached the court because of certain reasons. They have filed the representation previously, but they have not approached the court because they are waiting affected centers per stay. So we will definitely get the benefit of. जो भी होगा so subsequently they have filed the petition or what? Afterwards फिर 9th के बाद में फिर सर हमने करीब 15-20 petitions पे हमने फाइल किया है, but उनके results पे हमको स्टे नहीं था तो results उनके declare थे. सबमिशन मेरे सर मैंने 12th of July after 9 जुलाई मैंने 12th जुलाई को अपनी पिटीशन फाइल करी थी तो बट उनके रिजल्ट 14 जुलाई को डिक्लेयर्ड. It is connected with the bunch, but their results are declared. So on 9th you had filed the petition. I filed on 13. 13. Right. I think my petition was filed in 28th May, but the result was declared. So what was the interim order, subsequent interim order? It was restricted to the petitions which were listed on the last day. Only no petitioner. So my lord का view ये था कि इसमें result what is the date? 9th of June. On the reverse let me go. I hear my own first topic that was going to be. Yes. Number 1 is free to declare the result of all the candidates who have appeared in this UB exam held on so except the candidate who have filed his petition before this court till further on. So accept those who have filed the petition before this court. 12/6. 12/6. 12/6 तक तो अपलोड नहीं है. ये 12 RT9 on a particular home, a single petition. Number 69. 69 तो आंसर आती है. 11.15. 110.15. So my lord का view ये था सर कि result declare होने से nothing will happen because जो भी होगा final outcome. By 69 to यहाँ पे I would not be. There I have something to say. Look, there were some students who felt that they have done well and unnecessarily their result is withheld. So, my lord, we said that there are two views. Those who are not disputing, let their results be declared because entire 2027 and 1,264 candidates, their results were not declared. Their results were withheld because of few individuals were not filing a petition. So, for sake that those who have not disputed, let the result be declared. But I will come to that. Anything else? Anyone already? I have submitted the input received on Google Form because they are not able to file the petition. So we have taken the inputs. We have filed that report also. There are more than 200 on that particular. There were more than 200 students who want to read. We have submitted along with the reply. It's kind of a internet petition or kind of a test. This is the 8717 document number.
8139 30 पे ये तो डिनायल the report submitted. This is the document. It's kind of a Google petition where you have to say yes or no. So some 200 students have said yes, possibly. That's what I understand. Where is this? Page number? अरे भाई अब ये बता रहे हैं रिप्लाई, आप बता रहे हैं रिप्लाई. This is their write-offs. Things are adding up and they are rejoined. It's only document you are referring to. First is rejoinder, that is 24/5/25. अरे अभी इन्होंने बताया कौन सा? This is why we fulfill by book. This is almost 2 months of बहुत सारे documents file हुए. So 8135 is not relevant. So which one is given? 785425 is on there. Serial number 7854. 7854. Page number? Page number 20. Page number 22 से ले दो बस. 23 से ले. And serial number 21 has हाँ, page number joined that part of it is section 59. Page number 28 number 23. क्या है? Total. इसे गूगल फॉर्म पे पिटिशनर्स ने गूगल फॉर्म क्रिएट किया था कि those who are in support of real examination. उसमें इनपुट्स जो आए थे on that particular day it was more than 200. मतलब काफी सारे बच्चे जो अफेक्टेड हैं सर, दे आर अभी मेरे पास जो सर पर्सनली जो कॉल्स आ रहे हैं तो गाँव में सर कोई काम मतलब बच्चे झारखंड से एग्जाम देने, राजस्थान से एग्जाम देने यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर एमपी के दूसरे स्टेट से, डिफरेंट स्टेट से आ रहे हैं, बहुत रिमोट एरिया से आ रहे हैं, तो उनको सर इतना आइडिया नहीं था मतलब. तो जैसे जैसे उनको जानकारी मिलती होता है क्या है ये सर झारखंड से बच्चे यहाँ सबमिट किया, मतलब डिफरेंट डेट्स के हैं और सबमिट जो किया सर वो डेट जो हाँ वो इस ऑडिट डेट 24 ऑफ मई 24 ऑफ मई. और ऐसा भी नहीं सर, मैं आपको बताऊं कि बच्चे पेपर टफ होने की वजह से जो है पिटिशंस में आए. इसमें मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं दे आर पोटेंशियल स्टूडेंट. उनके पास्ट अगर करियर देखे प्रीवियस ईयर के स्कोर कार्ड हमने पेश किए कई पिटिशन के साथ में, दे परफॉर्म वेरी वेल प्रीवियसली, बट प्रीवियस ईयर में जो है किसी 2 मार्क्स से 5 मार्क्स से नहीं रहने के बाद उन्होंने दे हैव वर्कड हार्ड दिस ईयर. और इस साल ये पोजीशन होने की वजह से दे आर स्टिल विद मतलब 2 महीने से दे आर वेटिंग फॉर द आउटकम. वेरी वेग. सर ऐसा होता है, पेपर टफ होता है, उस वजह से लोग आते हैं. तो अभी तो मोर देन 2000 पिटिशंस फाइल हुई. हैव यू फाइल्ड सच प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ एनी ऑफ सच पिटिशनर? आई हैव फाइल्ड so many sir, मतलब 10-12 लोगों के होंगे. Can you show me one? Sorry. लक्ष्मी तो So 17344 is there. Ledger 27. हाँ इसमें भी है. Ledger 27, page number 27. लक्ष्मी का है. That's me. हाँ पिटिशनर का ही सर, मेन पिटिशनर का ही. Actually, Ledger 27. इसमें क्या बता रहे हैं? Previous score card. लास्ट ईयर. इसमें क्या है? तो इसमें जो लास्ट स्कोर था दैट वाज 572. हाँ 572 आउट ऑफ 720. आई थिंक देयर आर 180 क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चन हैज 4 मार्क्स. द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आर 720. तो इसको प्रीवियस स्कोर वाज 572. कहाँ जा पाए फिर? ये स्कोर कार्ड में सर देखेंगे तो below the photograph. Below the QR code you allow. below the QR code. हाँ 500. Total marks obtained out of 720. Yes. So she had 572. इसमें सर इशू क्या है सर कि बच्चे जो है 17722 में भी है सर, उसमें भी फाइल है. ऐसे काफी सारी पिटिशन में फाइल किया हुआ. इसमें सर जो फाइल है दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज.
बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट ईयर उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, बट उन्होंने इस साल ट्राई किया कि दे विल गेट क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से तो दे कैन नॉट अफोर्ड द फीस ऑफ प्राइवेट कॉलेज, तो उन्होंने और मेहनत की, और इस बार लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेट रहा कि क्योंकि वो there are no averments, my lord. These are all emotive arguments, but there has to be averment. Mr. X, he got this. He is poor. He filed the document article, then he must have made the averment also. Lord, Even I also. That 226 petition can be argued, my lord. It would be difficult. Mr. Mehta, please refer to this P7 of WP number 17344. Lord, out of 22 lakh students, if somebody shows one student or 10 students, then earlier they had good marks, they gave a second chance, and now there is electricity failure, my lord, then perhaps I'll be able to satisfy, not be a ground for interference in 226. Lord, my learned friend is raising all emotive arguments, not legal submissions. I'll be able to satisfy them. It happens, my lord, last time, suppose the paper is relatively easy, I might get 572. If this time it is relatively difficult, I might get, my lord, less than that. Lord, for example, except this 75 students, or let us take 200 students, this, Lord, internet, Google sheet, etc. Yes. The total number of students are 27,000 in Indor. Correct, my lords? Now, my lord, they have not come before your lordship. They are satisfied with their performance. Now, suppose we were to order a fresh examination. The fresh examination paper might be difficult for them also. So, we will be compelling them to appear in a second examination. Though they are happy with that, and I will be able to show that with documents. I can, bache is, I am also, father, we also have sympathy, and I am not taking it adversely. But ultimately, you will have to bring your prayer within the domain of Article 226. Yes, anything else? Anyone? Yes. So one thing learned history has seen that out of 27,000, 11 has performed so well that they have scored more than 600. That is not 0.5% of the total student. And on the legal aspects, if sir is concerning that, it is nowhere in the provisions of any law or constitution has been said that all the 27,000 has to file the petition. Only then the re-examination can be conducted. Huh? This argument in a the question put to indicate that how many approach to open to the examination. But are not very different person. How do you get the तो इसमें इंटरव्यूअर जो है उनका भी केवल सबमिशन ये है कि दे आर नॉट दे डू नॉट वांट टू रिकंडक्ट द एग्जामिनेशन, उनका एग्जामिनेशन अच्छा गया तो या नेक्स्ट उनको ऐसा नहीं है कि उनका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हुआ तो उसके पहले उन्होंने बोला था कंडक्ट नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर उनको अटेम्प्ट करना है. वो फैक्ट अलग थे अप्लाई. That was a different altogether. No, there also this description of electricity was there were rain and windows. The three things which were there in Indor. And the strong rain and outage of light. The entire climate was cloudy. Darkness was there actually. और वहाँ पे they were windows and they were relying upon initially. Let them complete. Yeah. Regarding the it might or might not one last something on that So one more submission in there. ये मौसम जो खराब हुआ था, that was not sudden. There was already advisory issued by the meteorological department. That was totally ignored. इतने बड़े लेवल पे इतने weather forecast was there. Secondly,
जो वेदर फोरकास्ट ऑफर्स है वो बैकअप जहाँ पे बैकअप नहीं वहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि नेचुरल लाइट वाला मौसम मतलब कि क्लाइमेट वाज टोटली क्लाउड। एंड सर जो ये बार बार एक सबमिशन दे रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे नहीं आए, मेरी खुद की नीस जब वो पेपर खराब हुआ था तो उन्होंने ड्रॉप लेके भी वापस से जो कोर्सेज हैं अडॉप्ट कर लिए थे, इसलिए उन्होंने डिस पिटीशन फाइल नहीं करी। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं ये रेगुलरिटीज और मिसमैनेजमेंट की वजह से करियर ही चेंज करा है सर लास्ट ईयर, मतलब जो अभी मेरे टच में है साइकोलॉजी में चले गए बच्चे। इट इज नॉट स्टडी इट मानो परमिट देम टू hypothetically think there is a re-exam. So it is not that the re-exam will be easier for a student to give. Hypothetically it is the re-exam is become tougher because every student who prepared from last 1 year, if he suppose they has to give a re-exam within a month or within 2 months, it will be more difficult for him. So it is not that it is unfair or fair. The students are suffering either way. But that's why we are before Mara, this is what it happens. And they were prepared for 1 last year and what they have faced. Yeah, that's all. Yes, please. Attention to the loss. Yes. बताइए WP number हाँ वो 93 It's 99. D It is P4. It is the infection driven by the exit register number. Of the reply number, sends you the reply file that they are doing. It shows the information given by the entity that there is not the specific position of the entity. It is physically denied that as the information relates to all these things, and they are categorized as third party. Therefore, the physical technology is developed. When normally just turn to the next page, that should be it's not that directly no it's on the book of the ability different output. That is actually fine. Is the reply given by the response number 5 is to our center. It has been categorically mentioned by just last third line. yes उसको तब से तमाम 205 में वहाँ जनता की सुविधा उपलब्ध नहीं। The center has categorically indicated in our ITM that there was no power basis. Secondly, while observing or going through the reply file by this page 19 of the reply in my edition, there was categorically mentioned this aspect that there was a power backups, there was a power failure for 1 hour, and there was attached a copy of the that mail received from the center that they were having the substitute certificate. There are contradictions that you received the copy of this information from the concentrator. So, obtaining this all this information, we are approaching on 12th of that June. और इसके अलावा एक लास्ट लाइन नेक्स्ट 55 में सेम पोजीशन वालों हां साथ ही ये ऑलरेडी तो सॉर्ट साथ ही अवगत करा है अभी अवगत कराया कि उक्त परीक्षा सेंटर पर एनटीए द्वारा कैमरे लगाए गए थे विद एन एडमिटेड क्वेश्चन वांछित सीसीटीवी फुटेज सॉर्ट इज इन्फॉर्मेशन वांछित सीसीटीवी फुटेज एनटीए के पास आता एनटीए से तब so if there was CCTV footage alone to tell you, they would tell you that this one put the CCTV footage there was sufficient light. कौन सा सेंटर पे R5 is SGS ICS. Technology and science. R5. So this is an admitted question that they were having they have denied this, stating that this is a mischievous petition. They were having lied and they then also they have to reply this. Even in the first reply, page number 30 or 31, the observer has admittedly they have admitted that there was no power backup. अभी जो रिप्लाई फाइल किया लेटेस्ट उसमें उन्होंने सेंटर से ले लिया है कि नहीं वी गॉट अ पावर बैकअप और डीजी सेट में यूज कर सकते हैं और कॉन्ट्रडिक्शन के साथ पॉजिटिव स्कूल कह रहा है कि मेरे यहाँ जो है डीजी सेट था ये था और ऑब्जर्वर कह रहे हैं कि दो ऑब्जर्वर फ्रॉम द सेम सेंटर यूनिवर्सिटी दे आर सेइंग कि देयर वाज नो पावर बैकअप और विजिबिलिटी वाज लो और वो सेंटर स्कूल जो स्कूल से उन्होंने मेल मंगा के सबको जो कम्युनिकेशन किया है उसमें दे आर सेइंग कि हमारे पास पावर बैकअप है यही कारण है कि सब जगह से आगे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद भी कोर्ट के पास चलिए ठीक
लॉर्डशिप आइटम नंबर 110117 लॉर्डशिप हमारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, पिटीशन हमने 16/5 को फाइल कर दी थी। चलिए ठीक है, देखिए। यस मिस्टर मेहता, Please, sir. Lord, I am conversant with Lord the concerns of Lord the students, and therefore I am not taking Lord any adversarial view. At the same time, Lord, it is our responsibility to place the correct facts and the consequence if the petition is to be entertained. Lord, please have some facts, my Lord, so that your lordships can have a holistic picture and take, my Lord, can arrive at a correct decision. Lord, the total number of students which, my Lord, National Testing Agency deals with in this examination is 22.09 lakhs. So kindly, my Lord, write down certain facts, my Lord, which may assist the court in arriving at a correct conclusion. yes. Lord, we are now in this petition's concern with Indor. Lord, I was not aware about 2 centers in Ujjain, but the total number of candidates with which we are concerned in Indor, not the petitioners, but total Indor candidates are 27,264. Correct, Manoj? Yes. Now, this 27,000 odd candidates were to appear in 49 centers. Okay. Lord, I may request my learned friend Mr. Rupesh Kumar to give a one-pager so that your lordship may not have to write down. Yeah. I have, Lord, this on the, and I'll share it with all my friends on the other side. Yes. Your lordship gets my, Lord. Yes. Now, Lord, there are total 49 centers. This is not a fact in dispute. Mhm. Now, Lord, please see, in 10 centers, there was no power outage. So everything goes smoothly. Then 19 centers, though there was a power outage, but there was a DG set backup, and therefore, my Lord, nothing happened. My Lord, the lights were on and everything went on smoothly. Lord, 19 centers, power outage, but enough natural light and DG backup. In some, my Lord, rooms, there was a DG backup. Otherwise, there was a natural light, which I will, my Lord, substantiate. How I say that there was a natural light and they could attempt the papers, I will be able to substantiate. Then, power out 10 to 15 minutes, but sufficient natural light. So there was not a complete power outlet, my Lord, from 2 p.m. to 5 p.m. The total duration is 3 hours examination. Now, power outage for 1 hour, but sufficient natural light is 18. My Lord, these are the affected people. My Lord, there may be some 10 minutes for power outage, etc. My Lord, it did not affect the examination and the performance I will be able to show. But my Lord, these are the 18 Lord, centers where there was a power outage for 1 hour, but there was a sufficient outrage, sufficient natural light. Lord, this question paper, Lord, there is very, very crucial point. This question paper contains, your lordships may now may not Lord, read, or I may go Lord, along with your lordships Lord, on this. Now, Lord, kindly come to 3.1. As per statistical analysis carried out by experts, average number of questions attempted by candidates at each center, Lord, your lordships may note affected center, each means each affected center, Okay. are almost the same, ranging from 119 to 127 questions. So pause here for a minute. It is not mentioned, but I am not making a statement which would not be disputed. How many questions were there? Yes, exactly. I was going to say that. 180. 180. 180. But the crucial and important part which we must assist your lordship is that there is a negative mark. The lordships are aware about negative marking. If I give a wrong answer, my right answer also gets cut. So we are always miser, unless and until we are sure that my answer is right. We do not attempt that question with a view to avoid negative marking. So this 119 to 127 is
an average attempt by students from each of the affected 18 centers. But now more important part is those centers which were not affected. Either there was no outage of light or there was DG set available. This number remains constant, 119 to 127. It's not as if in the affected centers, the questions which were attempted were significantly less. Maybe 2 or 5 questions here or there. Now, my lord, one more fact, my lord, I must, at the outset, I should have said this. Lord, one of the candidates from Indor Center who attempted his or her question, I'm not aware of whether it's a daughter or a son, but she is All India number 2. She's a topper from affected center. Be that as it, I proceed further. Now, my lord, on analysis of marks obtained by all candidates from affected centers, that is 18, 11 have scored above 600 marks and are considered toppers in NET UG of 2025. They're toppers, my lord. They have crossed 600 marks out of 720. And the total number of, my lord, such students are 1300, all India. In all India, 1300 students have crossed 600 marks, out of which 11 are from this 18 affected centers. Now, Lord, analysis of OMR sheets of petitioners reveal that petitioners have marked considerably good number of questions in the OMR sheet. Some have attempted more than 170 number of questions out of total 180 questions. Lord, I would request my learned friend, Mr. Rupesh Kumar, Lord, to show one MRA, Lord, this OMR sheet. Lord, just to show that there was nothing turns up, Lord, on the merits of the answers given, but please have a look at the OMR sheet. Lord, if I am a student and I am getting this is my Lord, answer sheet. Lord, your lordships, and me, Lord, possibly your lordships are much younger to me. But we used to get a blank answer sheet and we used to write our answers. But now in this OMR sheet, these are all multiple choice questions. So question number 1, 2, 3, and 4. If I feel that 3 is the correct answer, I will darken it. But the darkening pattern is also, my lord, suggestive of the fact that it's not, my lord, darkening in a dark environment. It's very well properly darkened choices which they have, Lord, adopted. Now, my lord, kindly come to my note, my lord, Roman 4. Yes. All the classrooms of all centers were of good schools in Indor, which had large windows and were very well ventilated. Examination was conducted from 2 to 5, so cannot be pitch dark. Now, what answers have been accurately marked and placed in the circles or bubble earmark. There was no smudging. If we try to do this in a small circle during when there is a darkness, we are bound to go out of that circle, which has not happened. Now, kindly see, before I take your lordships to this, what we did was that there were 2 categories of students. Out of 27,000 students, some 75 plus had come before your lordships and had the problem that we could not attempt the papers because of the light outage, etc. As against that, we have maximum number of students who did not come and some students who came and said that we have performed well. There was a light outage, but there was no light outage of such an extent that we could not answer our questions, and therefore, please don't interfere. Having 2 sides before us, the National Testing Agency, but what we did was that let neutral people who are experts in the subject take a call based upon their analysis. And if your lordships can please come to the report of the experts and who the reports are, or who the experts are. Please have a look at first
the experts, my lord, they are completely independent, against whom, my lord, no allegations are made except saying that they were appointed by us. But please come to page 67 of my reply. I dated 9th June. And this is the serial number in ERP. But it is in writ petition 17344. Filed on 26,027. 11344. It's 19th June. My lord, thereafter, my lord, I had given Serial number, 31. this copy is given to all my learned friends on the other side, and this is treated as, my lord, the main reply. On the top of right hand side, my lord, it is Just hold on a minute. Just hold on a minute. Let it load. Yes, I'm sorry. Yes, yes. Page number? 67. 67. 57. Yes, but just, my lord, who the members are. My lord, my learned friend, my lord, had some that they are our people, etc. My lord, I'm just showing that they are neutral people. My lord. We have appointed, obviously, only we can appoint Professor Neeraj Joshi, member, Department of Mathematics, Indian Institute of Technology, Delhi. Like your lordship gets, my lord? Page number 57? 67, my lord. 67. 67. Okay. 67, my lord. 67. Yes, Professor Neeraj Joshi. Neeraj Joshi, Department of Mathematics, Indian Institute of Technology, Delhi. Then another is Professor Chandrabhan Yadav, member, Department of Statistics, University of Delhi. Then Professor Girish Chandra, Department of Statistics, University of Delhi. Nobody were not connected with us, but they are in neutral experts. But I may not take your lordships to the examination, or rather, the procedure they have followed. But please come to page 57 now. It's an elaborate report. Yes. The title is Statistical Analysis of Number of Questions Attempted by the Candidates between Centers Affected and Unaffected by Power Outrage in Indor and Centers of an Unaffected Neighboring City. Not only Indor, because 49 total, 18 affected. Then they have the background is given. Group 1 is non-affected, Group 2 is affected. They have taken all the figures from us, and thereafter, if your lordships can come to the conclusion directly at page 66. Yes. Interpretation. In first interpretation, then conclusion. In all comparisons, the p-values exceed 0.01. Therefore, we fail to reject the null hypothesis. This implies no statistically significant difference in the number of questions attempted between affected and unaffected centers of Indor and a neighboring city. As it is evident from the analysis, with 99% confidence, within bracket, at the 1% level of significance, there is no evidence to suggest that power outrage at the centers has any significant adverse impact on candidates' performance as measured by the number of questions attempted. Hence, there is no significant difference between the average performance of the candidates who appeared at the affected and non-affected centers. We have also plotted the following bar diagram indicating the center-wise average number of responses in affected and unaffected centers in Indor, along with a neighboring city. This clearly indicates that there are cases of affected centers where candidates have attempted more number of questions than those centers which are unaffected. Hence, it is evident from the analysis that with 99% confidence, there is no significant difference between performance of the candidates who appeared at the affected and non-affected centers. The same holds in a comparative analysis with a neighboring city, which also had no thunderstorm. Thus, it can be safely concluded that there is no adverse impact of the power outage of the performance of candidates in the power affected center. But if there is no light or there is no enough light or sufficient light, the first
indication would be the attempt would be minimum. Attempted questions would be minimum. The second would be the broader result, and I have pointed out already that the broader result is that large number of students have crossed 600. One student is second in the at an all India level, and this is the average everywhere. So where there was a problem, we cannot be in a denial mode, but either there was a backup, there was a power outage only for some time, and third, when there was a power outage for 1 hour out of 3 hours, there was sufficient light, and they concluded. Now, what would happen if the prayer of the petitioner is to be granted? The difficulty would be, your lordships are aware, the level of difficulty of one question paper is always different from the level of difficulty of another question paper. I appear, suppose in a question paper of chemistry today, and the same subject, if I appear in a new question paper tomorrow, the level of difficulty would be different. This issue came to be examined by the Honorable Supreme Court in a very recent judgment, and I'll assist your lordship with that judgment, where it is at page. It's not annexed, I'll request Mr. Rupesh Kumar to hand it over. It was a question where can it be done in 2 shifts, considering the number of students? Court said no, it cannot be. So what was the reasoning assigned? Your lordships have this judgment here. Aditi, I just take your lordships. Para 5. At present, your lordship gets from here. Yes. At present, we are examining only the question of holding the examination in 2 shifts or in a single shift as prayed for by the petitioners. This court on 5th of May 25 issued notice in the present petition and required respondents to file, that is us, to file their response. The response has been filed, and primarily 2 grounds have been taken in support of holding the examination in 2 shifts. First, that the number of candidates who would appear in the said examination are too large. We wanted 2 shifts, making it difficult for the examining body to identify sufficient number of secure centers to hold the examination in 1 shift. And the second is that if the examination is held in 1 shift, unscrupulous elements may got involved and there could be malpractice. Further, another contention vehemently urged on behalf of respondent is that even if the examining body makes an effort to identify more secure centers, it would take time, which may result in delaying the holding of the examination as per schedule, etc. Kindly come to 8. This contention also deserves to be rejected as there is still enough time for the examining body. We find that total number of candidates who have applied this year for NEET PG examination is 242,000. The examination will be held all over the country and not in one state. We are not ready to accept that in the entire country, considering the technological advancement we have achieved, the examining body cannot find sufficient number of centers. In this regard, we may also note that the examining body has collected hefty examination fee, etc., etc. Now, 10 is very, very relevant for the present purpose. Holding the examination in 2 shifts would invariably enable arbitrariness and would not entail at par evaluation of the comparative merit of candidates who take the examination. No 2 question papers can ever be said to be at an identical level of difficulty or ease. There is bound to be a variation. Normalization may be applied and adopted in exceptional circumstances, but not in a routine manner year after year, especially when the number of candidates is not unduly large, as is the case presently. Rest is irrelevant, Madam. When we said that we would have 2 shifts, God said you cannot.
because there would be two question papers having different level of difficulty. Now, Manoj, kindly appreciate, Manoj, 75 students, or I take my learned colleague, Manoj, my learned friend on the other side, 200 students. They say that they face some difficulty because of this. And your lordships were to direct re-examination. Manoj, then 27,000 students would be sitting in the examination without their wish, desire, or consent, having a different level of difficulty of the question paper. That is the major, Malord, issue which arises in all such examinations. And therefore, Malord, in recent judgment which I have quoted in my Malord, Madras High Court, Malord, has rejected in this very examination, Malord, a similar prayer. Malord, Madras High Court has an, Malord, it's not a binding precedent. It only has a persuasive value. Malord, it assists the court. I'm conscious. I'm not, Malord, citing it as a binding precedent. In this very reply, please come to page 11. Page 11. Start from para 20. There are 22 minutes. There are two. That the Honorable High Court of Judicature at Madras had rejected the contention made by the candidates at NEET UG 2025 in writ petition so-and-so. Now, I may read with your lordship's permission. Yes. When the National Testing Agency, after thorough investigation, had arrived at the above conclusion, though such conclusion was disputed by the petitioners, this court has found no grounds to deviate from the above conclusion, as there is no malice pleaded against National Testing Agency. Therefore, when the authority themselves, after field verification and with scientific method means the method adopted by the committee, which I have shown, had arrived at a reasonable conclusion that there are no grounds for re-examination, the same needs to be accepted unless the said report is tainted with malafides. In the instant case, I do not find any malafides on part of the respondents. Furthermore, all over India, there were about 22 lakh students have participated in NEET UG 25 examination. In such view of the matter, if any re-examination is permitted on trivial grounds, the same would seriously affect the level playing field of more than 2 million candidates. Hence, this court does not find any merit in these repetitions. Because then, Manoj, we do not know whether the new 27,000 candidates of Indor who are not consenting or agreeing for a re-examination would get the similar level of difficulty in question paper as compared to the remaining 22 lakhs. That's one of the very major factor which generally weighs with the court. So, in my respectful submission, but without taking any adversarial approach, we appointed a committee and we said that you examine everything and try and find out whether there was any impact on the performance of the student. But my performance may be in two parts. Because of my inability to answer the question, because of my lack of hard work, that is my lack of performance. And second, the physical performance, because there was less light or there was some other problem. But they say that there was no problem which would have affected their performance. One of the candidates who is a petitioner is scoring good marks. I can't disclose, but many of the candidates have scored good marks because their results are not officially declared. But even they have scored very good marks. But out of just fear which every student would have and would have the kind of wish that we can still do better if we get another question paper. They are before your lordships and they are our children. We must take their issue seriously. But we as an agency cannot forget the rest of the 27,000 students who are not before the court and they are happy with their performance. Otherwise, what would happen, the girl who is a topper, now if she appears in the fresh examination, which she will have to, she might go down. There are people, 11 people who are in the toppers list
crossing 600, they will have to give examination once again. So they are not before the lordships. So my respectful submission is that considering the limited scope within which your lordships would examine these issues, but once there is a committee against whom there are no malice alleged, and they have found, they have adopted scientific methodical examination of the entire issue and have come to a very, very concrete conclusion, my lord. Your lordships may perhaps, my lord, not like to disturb that finding. My lord, if my learned friend Mr. Rupesh Kumar also appears in some matters, wants to add. Yes. I just want to add to the Ujjain matter. So far as Indor is, I am adopting my learned solicitor views. The fact, one additional fact is, in Indor petitions also, the petitions are pertaining to those centers where there was no power outage here. I can give the number also. Read petition numbers. Is there those? Yes, we are. Read petition 18816, 19062, and 19734. We have stated in our counter affidavit. 19734. 19735. And so far as no power outage. No power outage. Ujjain is also concerned. Out of 6 petitions, 2 petitions were filed by the petitioner from the center where there was no power outage. I'll just give those number also. Yeah, these are from Indor. First was from Indor. Okay. Yes. Let me just this petition 19297 of 25. 19297 of 25. And 19330 of 25. Because in both the centers, power had gone after the exam got over here. This is from Ujjain or Indor? It's Ujjain. Ujjain. And apart from that, only because their claim is that 40 to 45 minutes power outage was there. In other centers, maximum power outage was 10 to 12 minutes. This is what I want. Has there been any occasion for the need to this NTA to conduct the examination press for some of the students or for all the students? Has there ever been any occasion? Well, I'll just take instructions for an answer. Sir, I have one submission, sir. Previously, the committee formed by the NTA suggested the re-examination on the optional basis. So that is not compulsory that if somebody has got good marks and he has to appear very. Secondly, the problem this happened when last year only it is mentioned in the judgment. I have given you the copy of both. That was on the basis of high power committee. This time I answer, my lord, I have taken instructions. Yeah. Last year, Lord, your lordships are aware, my lord, every student has a different question paper. Mm-hmm. Last year, some 1600 students, my lord, were such that they got the paper where the question was A, but there were 2 correct answers. So if I take, my lord, B or I take D, both were correct. Mm. So the Supreme Court, based upon our committee's report, said that for this 1500 students, take another examination. Because the fact situation was different. I hope, Lord, I am able to make myself clear. Yes. For example, Lord, if Mr. Rupesh Kumar is a practicing lawyer, is following A, practicing lawyer, B, senior advocate, then both answers are correct. That kind of a situation was there in some questions. And that was in 1563, which could be identified by the committee. Here, my lord, if 75 candidates are to appear for a fresh examination, then there would again be a level playing field dispute with 22 lakh students. So my submission says reasonable and
When sir, all the petitioners, nobody is requested for base marks. Why? Because they want a fair chance. They are not looking for any. They are not beggars actually. They are potential candidates. They have a potential. They can, but because of these circumstances, listen to me. Kindly see the page number. See page number 15, annexure R1P. It was strictly mentioned in the report that the district level committee जो इन्होंने बनाया था, they have to ensure, they have to conduct a physical audit and they have to upload the report. ये सारे जितने facts और figures बता रहे हैं, all are procedural. कोई evidence, कोई CCTV footage, DJ set जहाँ पे use कर रहा है उसका log report, कुछ भी evidence कुछ नहीं कर रहा है, all procedural arguments. तो add with they are relying on the Madras the following say. There is also a report, there are also similar reports happening, but the Madras circumstances were different. Intensity of the circumstances were different. That next read the context of the petitioner. There were only 5 petitions. 5 in the Madras High Court law. सर एक ही सेंटर से वहाँ पे एक 30 petitioners थे, बट वहाँ पे 10-15 मिनट्स का लाइट जो है पावर आउटेज था, बट वहाँ पे अंडर स्टॉर्म या वो सब चीजें यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस थे, वो वहाँ पे नहीं. लेकिन सेकेंडली सर लेवल ऑफ डिफिकल्टी की जो बात है सर, जितनी भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होती है इसमें कभी सिंगल पेपर नहीं होता. इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर 2-3 सेट्स. ऐसा नहीं है कि आपको सेपरेटली री एग्जामिनेशन करना है एज पर माय नॉलेज. तो आपको डिफरेंट पेपर, आपको डिफिकल्टी लेवल आप इक्वल रखते हैं. 4 से 5 सेट ऑलरेडी आपके पास में क्लियर होते हैं. सेकंड चीज प्रॉपर का सबने बताया, मुझे लगता है देयर इज सम कंफ्यूजन. प्रॉपर जो इज फ्रॉम माय लोकेलिटी ओनली, उत्कर्ष इज द टॉपर ऑल इंडिया अचीव सेकंड रैंक. So he is not from the affected center. Thirdly, no, he is from affected center. No, sir. He is concerned, sir. There is no freezing definition to add it, but a question that comes in the written question is Attempting and accuracy is different, sir. making a word to the power of it, informing in that all the data. What they see is the power of it. All the being spent lots of everybody is simply on handling the साइंटिफिक ऑर्डर पर स्टैटिस्टिकल जो डेटा है वो दैट इज अंडर दिस नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट्स, बट साइंटिफिकली वी कैन प्रूव द स्ट्रेस लेवल आल्सो, वी कैन एनालाइज द डिफिकल्टी लेवल आल्सो. दैट कैन नॉट बी मेजर एक्चुअली. केवल क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, उस पे आप एक्सरसाइज करें बिकॉज दैट डेटा वाज अवेलेबल विद यू. पर बच्चे ने जो वहाँ एनवायरनमेंट फेस किया, जो एनवायरनमेंट वहाँ बच्चे ने फेस किया, जो डिफिकल्टी लेवल, जो एंजाइटी, जो फियर था, जो एग्जामिनेशन की जो एनवायरनमेंट उसको नहीं मिल पाया, उसका असेसमेंट कैसे होगा? I go down to the OpdatelNeet system, there is always a stress. When the exam is conducted, there is always the level playing field mark. So it is the students over there who is always good and they are ready for that also. They have to face the toughness paper. They are ready for that. That will not be a reason for not being the safe. Psychological disadvantage cannot be suffered by the principal. Yes. A child or person which then they do not work. Because it's not So individual impact cannot be. It can be argued either way. They are reading the expert of economic history by us. But they are having the system and they could double in the head. That you are. Yes, Mr. Mehta, what do you have to say about this? I could not hear Manoj because there is some difficulty. Mr. Rupesh Kumar can respond, Manoj. Regarding this CCTV footage, which has been denied to them. Yes, sir. But why we have denied the CCTV footage is because once the power goes, there won't be any CCTV footage. That is a difficulty. That's why I'm saying that. There was no power there. There was no power there. Rest of power only here.
So you are admitting. In fact, it is already an admitted fact that there was an power out. In some centers, Manoj, there was a power failure for 10-15 minutes Yes. with good visibility. In some centers, there was a power failure for 1 hour with good visibility. But that's not a fact in dispute. The question is, Sir, in their reply, they have submitted that 52 petitions are from those centers where the power cut was for more than 1 hour. और इसमें भी आज सारे लिस्टेड नहीं हुए सर. अभी मेरा कम से कम 35 पिटिशन जो है वो करेक्ट नहीं हुआ था. इसका मैं I'm not taking a wrong or a factually incorrect stand. Yes, there was a power failure. The question is, did it impact the performance of the candidate? And for which, Manoj, there is a report of the committee which is not under challenge on any ground. That the methodology adopted is wrong. There was a malice. There was a bias. There was a predetermined mind to arrive at a particular conclusion. They are independent, neutral experts. Yes. You are also a student. Yes. Fortunately. This is the list of 24 exam. After writing I have left the other 24 this patient has been Neet Reneet would not have done to all the students who are there in that is definitely the document itself. But that is very considered. Okay, that considered. It is important. But the one thing I will say, आप जो 153 स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं उसमें भी एंड जो all students why a topper should give an examination in NEET 24 में सर 153 को opportunities मिली थी उसमें भी only 813 has adopted for the re-examination. It is not that every student has to give their examination. It is the option for them. Optional basis पे submission ये सर optional basis पे हो सकता है. सबके लिए compulsory नहीं कर सकते. जो certain reasons से नहीं देना चाहते, एक attempt और लेना चाहते तो उनको force नहीं कर सकते. तो optional basis is the right solution. Well, the level playing field is always compared with the entire nation, Manoj, because Okay, I will pass the order. And before we part, I would just, without prejudice to either of the parties, I would also like to carry out a test in the courtroom itself. I would ask my reader to switch off all the lights because today also the weather is heavy here. So I believe that at least I will have some clue what went into the minds of the students while they were giving the exam. Very true. I don't know whether prejudice to either of the parties. For my own satisfaction. Yes, Your Lordship can certainly do that. Performance of the OMR sheet, Your Lordship, that performance does not show that the candidate was anyway affected by that. पर आज तक मौसम उतना ज्यादा इवन गर्मी है इसलिए क्योंकि आज मौसम खुल गया आसमान खुल गया है. हाँ उसका जो गलती भी एक बार मतलब चिंता के देखना चाहते हैं चिंता है मुझे तो ज्यादा राइट है मतलब दैट वे भी डन है दैट इज मे बी फॉर सर रीडर विल नॉट बी अंडर स्ट्रेस क्योंकि पास फेल का कोई नहीं रीडर now my learning friend has started being defensive. नहीं अरे तो बंद करना लाइट बंद और ये स्क्रीन बंद कर आगे बंद
responsibility is to go ahead. But I believe there. Okay, I will pass the order. Yes, sir. Sir, I will like. I was going to submit the same request to the Lord that can we turn off the lights and realize the grievances we have gone through? There are two items. One is deputy number W2610/25 and one is 2027/25. Hold on. Double two. 2610/25 and W472/25. What happened in these cases? These are related to OMR and mismatch of I'm taking 2261. Attention, I think given to. it has You want to reply to? सर एक लिस्ट हमने power. The power the second one is this council for the petitioner has submitted an application for amendment report. And we had filed a reply on their petition and It has nothing to do with this power law. not power. So it will be decided subsequently. Lordship, mention has been given, but yet not listed here. So this will be checked tomorrow because he has been Double 2610 and 20472. These are two petitions. 472 is listed today and 92. 92 year. There is a amendment application. We should press that application. That amendment is allowed to flag by the amended petition. And what is the IN number? The ID number is 60. That's a bit. WP number 20472/25. Or on IN number? 5768. For the reason of time is staying, the application can't allow. Also to carry out the amendment within 2 working days. So when do we want There are some technical aspects in it that. let's clear WP number 22610 and 20472. 610 is different matter, But it has nothing to do with the present. This is not Okay. but इस दोनों का भी आपस में कोई कनेक्शन ठीक है कोई बात नहीं. इसको जो है डबल सिंह 620 को कल रखिए मानो क्योंकि इसमें 22 नंबर बता दिया और हम 353 नंबर ऑप्टेन किए हैं हमसे भी दो के लिए आप पे भी करना है आपको एग्री कर दो जो एक चीज एसटी बता कि मार्च है इट क्या उसमें बात है वी कैन क्लैरिफाई वी कैन फाइंड आउट इट वेरीफाई करना पड़ेगा. वेरीफाई करना पड़ेगा टेक सम टाइम result of which if we will start the counseling process then I will be at देखो काउंसलिंग इतनी जल्दी थोड़ी हो जाती खत्म भाई. जैसे कि आपके इस स्टेटमेंट के बाद ही होगी इसको 30 को करके 30 तारीख से लेट्स this contention that counseling will not mean to नहीं नथिंग लाइक. अरे नहीं भाई इतना बिल्कुल ओवर द एज तो है. इसको बोलता है ठीक है उस टाइम पर ना 30 को तक तो काउंसलिंग है तब फिर इसको नहीं है इसको 25 को करते हैं जुलाई में होने वाली है तो काउंसलिंग तो 30 तारीख को करते हैं. 30 We are not deciding the date of counseling. It is decided by the central government. Yes. And it is for the all India level. It cannot be not possibly required to stay anything. If you are not, I am not passing any interim order. Yes. And if we decide the original date for the company, you will come and then for ठीक है देखिए. मैंने एक लिस्ट discount करनी नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया. Can I get those OMR sheet that is also here?
Lordship, I have submitted a list to the reader that in which petitions the results is declared. I have given a list to the reader, sir, that in the petitions in which the results are declared, beside filing of the writ petition. Despite filing of the petition. Yes. उसके बारे में क्या है? Those petitions which have been filed और ये तो petitions listed होंगे, सीधा इंटेंट ऑर्डर। आपकी petition नोट से तो listed नहीं बल्कि इसलिए उसमें इंटेंट ऑर्डर नहीं हुआ, इसलिए हमने इसे डिक्लेयर कर दिया। 12 जो petitions listed हुए, इसमें हमको कोर्ट ने इंटेंट रिप्लेस कर स्पेसिफिक ऑर्डर बिकॉज सर 9 जून को जो एंट्री ऑर्डर पास हुआ था उसमें स्पेसिफिकली वर्ड ये था कि टिल द डिस्पोजल ऑफ द पिटीशन ऑल द बंच जो भी पिटीशंस फाइल हो जाएगी सब पे सेम ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। इसलिए ऑर्डर नहीं दिया सर। यू हैव टू कॉपी ऑफ दैट ऑर्डर सर। उसमें व्यू ये था माइनर था कि 14134 ऑर्डर डेटेड 6 ये नंबर देखा बड़ा फाइलिंग ऑर्डर होने के बाद पहले एट दिस स्टेज नो एंट्री और रिलीफ कैन बी ग्रांटेड लिस्टेड इन So except those petitions which were listed on 966. Yes. Only those petitions that are not. Okay. Doesn't make any difference. I will leave service house. so it will judgment of the lordship will cover all the writ petition till the disposal of this. Yes. There is only one thing, my lord. Nobody has challenged the report of the expert committee. My lord, that may be possible. I have submitted the denial. No, denial is one thing. There is no challenge to the report. Not need to be challenged or not because court is the expert of all. No. You have filed your yonder and yeah, I have submitted the denial of the report. Yes, I have mentioned all the things. Not needed. And the difference are the court Right. is the expert of all. You have passed your. Grateful to you. Thank you. Hello, I am requesting for serial number 123. My lord, it is demolition matter. My lord. Demolition matter से मामले अभी और साइकिल बाड़ा करना क्या साइकिल बाड़ा चलिए जी, है ना। तो एक बार जो भी ज्वाइन कर रखे हैं सभी लाइक कर दीजिए। आपको बता देते हैं क्या हुआ है समराइज फॉर्म में, है ना। सब कुछ बता देते हैं, एक बार सभी लाइक कर दो जिन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत लंबे समय तक ये सारी चीज़ें चली हैं, बट इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकल पाया। आप सभी ने देखा है ना। पूरी हियरिंग आपने सुनी है और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपने इसको सुना है, बट रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल पाया है। कंक्लूजन इतना ही है। नेक्स्ट हियरिंग डेट इसमें दे दी गई है, ठीक है। अब जो आपको बता देते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चली, है ना। यहाँ से शुरू हुआ था, सीसीटीवी कैमरे से बात स्टार्ट हुई थी कि सीसीटीवी की फुटेज की। उसके बाद में जो जनरल आपके जो तुषार मेहता जी हैं, सॉलिसिटर तुषार जनरल मेहता, है ना, उन्होंने बोला कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 600 प्लस मार्क्स इन सेंटर पर देखने को मिले हैं। उसके बाद में उन्होंने बोला कि 75 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन डाली है, सिर्फ जो 48 सेंटर है उनके अंदर, और जो भी इनमें से अफेक्टेड सेंटर है उनमें से भी सिर्फ 75 स्टूडेंट्स ने पिटीशन डाली है। उसके बाद में यहाँ पर जो भी पिटीशंस जिन्होंने डाली थी, उन्होंने बोला था कि कलेक्टर का जो स्टेटमेंट है वो सारा आ गया था, पावर कट हुई, अंधेरा छाया, और पहले ये जो वेदर के बारे में बताया गया था, पर एनटीए ने सारी व्यवस्थाएं सही से नहीं की, है ना। सारी चीज़ें हुई इसके अंदर। उसके बाद में जो रिकॉर्डिंग है, फ़ोटोज़ हैं, वो सारे जज साहब ने चेक किए, ठीक है। उसके बाद में पूछा गया, एनटीए ने पूछा कि कौन से रूम की ये सीसीटीवी फुटेज है, और सेंटर के बाहर की है, सेंटर के अंदर की है, सारी चीज़ें वहाँ पर पूछी गई। उसके बाद में इन्होंने बोला कि 14 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, और 9 तारीख को हियरिंग हुई थी, उसमें ये डिसीजन दिया गया था कि सिर्फ 75 स्टूडेंट्स के लिए बात होगी, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए बात करना यहाँ पर गलत है।
ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला कि इतने स्टूडेंट्स ने पिटीशन नहीं डाली है, 75 स्टूडेंट्स ने पिटीशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और ने भी डाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गाँवों से बिलोंग करते हैं, पिटीशंस नहीं डाल सकते हैं। और जो गूगल फॉर्म है स्टूडेंट्स के द्वारा फिल करवाया गया था, उसमें 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने गूगल फॉर्म जो है फिल किया इस तरीके से, ठीक है। तो ये टोटल जो है 275 के अराउंड स्टूडेंट हो जाते हैं। इस तरीके की बातें यहाँ पर हुई। उसके बाद में जो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रही, है ना। उसके बाद में बोला गया कि यहाँ पर सिर्फ जो एमपी है, एमपी स्टेट से ही स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं आते हैं एग्ज़ाम देने, बाहर से भी स्टूडेंट आते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को इस तरीके से परेशानी हुई है। झारखंड से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, सारी जगह से स्टूडेंट आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा जो हुआ है वो सिर्फ एमपी के स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं हुआ, अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यहाँ पर आते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम फेस हुई है, ठीक है। अब लास्ट ईयर की जो प्रीवियस ईयर्स का स्कोर कार्ड है वो भी उन स्टूडेंट्स जिन्होंने पिटीशन डाली थी उनका शो कराया गया, दिखाया गया कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके लगभग लास्ट ईयर 600 के अराउंड मार्क्स थे ना। अलग अलग बताया गया कि इसके 560 थे, इसके 572 थे, है ना, इस तरीके से बताया गया। उसके बाद में यहाँ पर जो आपके तुषार मेहता जी उन्होंने बोला कि ये सारा फालतू का डिस्कशन है, इस पर डिस्कशन करना गलत है। लास्ट ईयर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ है ये ज़रूरी नहीं है, लास्ट ईयर जिसके अच्छे मार्क्स आए थे उसको इस साल भी अच्छे मार्क्स ही आएंगे ना, इस तरीके से उन्होंने बोला। जिसकी प्रिपरेशन लास्ट ईयर अच्छी थी ऐसा ज़रूरी नहीं है इस साल भी प्रिपरेशन अच्छी होगी, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई। उसके बाद में जो तुषार मेहता उन्होंने बोला कि जो पेपर कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर हम दोबारा से कंडक्ट करवा सकते हैं, बट पेपर करवाने में एक ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो डिफरेंट होगा। और हम नहीं चाहते कि जो लगभग 8000 स्टूडेंट हैं सेंटर पर, जो भी एमपी के अंदर जितने भी सेंटर बनाए गए हैं उनमें से 8000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 75 स्टूडेंट्स को ही ये फ़ायदा दिया जाए दूसरे पेपर के लिए, है ना। तो वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, सभी स्टूडेंट्स के लिए समानता का अधिकार है, ठीक है। तो 75 स्टूडेंट्स कोई अलग से नहीं आए, जो और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हुई तो 75 स्टूडेंट्स को क्यों प्रॉब्लम हुई। उसके बाद में यहाँ पर जनरल तुषार मेहता जी ने बोला कि इनमें से जो है एक स्टूडेंट जो है टॉपर लिस्ट में भी है, उत्कर्ष उसका नाम है, ठीक है, इस तरीके से। और इस पर जो है जवाब में दोबारा दिया गया कि नहीं वो उस सेंटर से नहीं है, वाकई उस सेंटर से था और टॉपर उसी सेंटर से निकला था। उसके बाद में उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात की गई, क्वेश्चन अटेम्प्ट के बारे में बात की गई कि कहीं पर भी ऐसा नहीं देखने को मिला है कि उनकी परफॉर्मेंस पर कोई इफेक्ट आया है ना। नंबर ऑफ एवरेज जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो सारे जो एवरेज देखने को मिल रहे हैं 119 से प्लस, मतलब क्वेश्चन जो है 180 में से आउट ऑफ 180 180 में से लगभग आपके 119 प्लस क्वेश्चन हर स्टूडेंट ने उन सेंटरों पर किया है, जो भी अफेक्टेड सेंटर है उनमें से किया है। वहाँ पर नेचुरल लाइट थी इसीलिए ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, अदरवाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते, ठीक है। ये सारी चीज़ें बोली गई। उसके बाद में बोली गई कि इस तरीके से यदि नेचुरल लाइट नहीं होती तो डार्कनेस में, अंधेरे में आप जो है बिल्कुल गोला सही फिल नहीं कर सकते, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में और राइट गोला फिल करने में प्रॉब्लम होती है यदि वहाँ पर अंधेरा था तो, है ना। नेचुरल लाइट थी इसलिए सारी चीज़ें हो पाई, ठीक है। उसके बाद में टाइम ड्यूरेशन बताया गया है कि लाइट इतने मिनट गई, है ना, वो सारी चीज़ें डिस्कशन हुई। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया कि इनमें से जो स्टूडेंट है 11 स्टूडेंट ऐसे जिनके 600 प्लस मार्क्स इस साल देखने को मिल रहे हैं, जो भी अफेक्टेड सेंटर है उनमें से 600 प्लस स्टूडेंट्स, 600 प्लस जो मार्क्स आ रहे हैं उनमें से 11 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। इस तरीके की बात बोली गई। उसके बाद में उनकी ओमार सीट, जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिटीशन डाली है उनकी सभी की ओमार लाई गई, है ना। और जो आपके तुषार मेहता जी है उन्होंने ओमार दिखाई कि ये देख सकते हो आप, है ना, राइट एकदम एक सर्किल को छोड़कर एक स्टूडेंट ने एक सर्किल गलत किया है, फिल किया है, बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने सभी ने जो है राइट सर्कल फिल किया है राइट ओमार के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके की बातें हैं और फिर भी स्टूडेंट्स जो है राइट सर्कल जो है फिल कर रहे हैं, कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं हो रही है ओमार में, तो इसका मतलब वहाँ पर नेचुरल लाइट थी, ठीक है। तो जो सीसीटीवी फुटेज आप सब दिखा रहे हैं वो सब बेकार है ना, उसका कोई महत्व नहीं है। हमने कमेटी बनाई है, कमेटी ने हमको रिव्यू दिया है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं देखी गई है। उसके बाद में हमने परफॉर्मेंस पर भी अलग से कमेटी बनाई गई है और परफॉर्मेंस पर भी अलग से कमेटी ने अपना रिव्यू दिया है कि उनकी जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट किया उस पर कोई फ़र्क नहीं आया, लगभग सभी स्टूडेंट ने समान क्वेश्चन एवरेज जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट वहाँ पर किए। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग जो क्वेश्चन है उन पर भी उन्होंने दिया
कि जो एवरेज मार्क से जो नेगेटिव मार्क में निकल के आ रही है अदर सेंटर पर, वही उन सेंटरों पर निकल कर आ रही है। तो इससे ऐसा कहीं पर भी नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं, ठीक है, ऐसा वहाँ पर बोला गया। उसके बाद में ये सारी चीज़ें बोली गई कि एक्सपर्ट्स और कमेटी की जो रिपोर्ट है वो वहाँ पर दिखाई गई। तो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए है ना उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी मतलब अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड सेंटर है उन पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से नहीं बोल सकते आप कि यहाँ पर इस तरीके के हालात देखने को मिले हैं, नेचुरल लाइट वहाँ पर अवेलेबल थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई, मैंने आपको बता दी है समराइज फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में आपको बता देते हैं कुछ और बात हुई है तो, है ना, बट इस सारी चीज़ों पर जो निकल के आया है उन्होंने, उसके बाद में जो जज साहब हैं उन्होंने बोला कि हमारे सामने रीडर बैठे हैं और हम इनको अंधेरे में बोलेंगे तो अंधेरे में भी ये पढ़ लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों के प्रति वो अडेप्ट हुए पड़े हैं, ठीक है। इस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट दिए, बट कहीं ना कहीं वो एक मजाकिया अंदाज था, बट उससे कोई सेंस नहीं है। फिर ये सारी चीज़ों के बीच में जो है कहीं ना कहीं और तैयारी के साथ उनको बोला गया कि और सबमिशन इसको जो भी डालना है इसके अंदर, जो भी आप स्टेटमेंट लेके आ सकते हो, जो भी प्रूफ लेकर आ सकते हो, या फिर एनटीए सारे स्टेटमेंट डाल सकती है। बट अभी फ़िलहाल इस पर कोई डिसीजन पर हम नहीं पहुंच सकते, और नेक्स्ट हियरिंग डेट इस पर दे दी गई है ना। वो डेट जो दी गई है अभी वो फाइनल नहीं हुई है, 26 या 30 तारीख डेट दी गई है, बट कुछ भी डेट दी गई हो नेक्स्ट हियरिंग डेट इस पर दे दी गई है, ठीक है। इस तरीके की सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पर कुछ डिसीजन निकल के आएगा। लास्ट में लगता है कि ये पिटिशन्स भी खारिज हो जाएगी, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला है वो भी इसमें जो है रखा गया है, इसके साथ में पेश किया गया है। उसके बाद में जो लास्ट ईयर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया था कुछ स्टूडेंट को एग्ज़ाम कराने के लिए, है ना, उस पर भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली हैं। तो ये एक अपडेट आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो लास्ट ईयर क्वेश्चन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए था, वो जेन्युइन प्रॉब्लम थी, तो इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। तो मेन चीज़ यही है कि वहाँ पर नेचुरल लाइट थी और किसी भी तरीके से कोई भी स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पहुँचा है, ना ही क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जितने एवरेज स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं उतने ही उस सेंटरों पर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं, वहाँ से भी टॉपर्स निकल कर आए हैं। उसके बाद में 600 प्लस स्टूडेंट्स वहाँ पर भी निकल कर आए हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई। तो इससे ये लगता है कि इन सारी चीज़ों में आपको पता है टाइम ख़राब होगा, बट रिजल्ट इसका कुछ निकल कर लास्ट में नहीं आने वाला, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पर दे दी गई है, जिसके लिए आप सभी तैयार रहें, है ना। और ये काउंसलिंग को थोड़ा डिले करेगी आपकी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है ये जल्दी से फैसला होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला कॉम्प्लिकेट होगा। जैसे लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, है ना, धीरे धीरे काउंसलिंग को डिले कर दिया था, बट रिजल्ट कुछ नहीं निकल के आया था। तो इस तरीके से ये इसमें भी देखने को मिलेगा, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, बट जो आपकी काउंसलिंग है उसको ये डिले कर सकता है ना कहीं ना कहीं, क्योंकि इस पर डिसीजन निकलना होता आज, क्योंकि जज साहब भी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं दे सकते ना, स्टूडेंट्स का मैटर होता है। स्टूडेंट्स के जितने भी मैटर्स होते हैं उनमें डिसीजन आपको थोड़ा सा लेट दिया जाता है ना, जल्दबाजी नहीं की जाती है डिसीजन्स में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना होता तो इतनी बड़ी हियरिंग के अंदर आज सारे स्टेटमेंट पेश किए गए, और जो भी जिसको बोलना था, है ना, सबमिशन करना था, वो सभी ने पेश कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज़ तो कम है कि एग्ज़ाम दोबारा से होगा, बट ये थोड़ा सा आपका डिले चलेगा मामला, और ये लंबा खींच सकता है, काउंसलिंग को डिले कर सकता है आपकी को। नेक्स्ट हियरिंग डेट दी गई है इस पर अभी फ़िलहाल के लिए, और कुछ अपडेट आएगी तो आपको मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल जितना आपने देखा है मैंने उसको आपको समराइज फॉर्म में बता दिया है, पूरा कंप्लीट, है ना, जो 1-1.5 घंटे के अंदर देखने को मिला था। अदरवाइज़ इसको सुनने में तो बहुत टाइम लग जाता पीछे सुनते तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। अब आप सभी का एक बार डाउट ले लेते हैं, एक बार सभी लाइक कर दो ताकि सभी के पास नोटिफिकेशन चली जाए। उसके बाद में जो भी आपके डाउट हैं उन सभी का रिप्लाई देना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 बाय 1। तो सभी लाइक ज़रूर कर दो, है ना, लाइक सभी कर दो। उसके बाद में देखिए रिप्लाई देना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हियरिंग डेट, है ना, 26-30 कुछ इस तरीके से बोला है, फाइनल नहीं हुआ है ना। पहले उन्होंने 26 बोला था, काउंसलिंग इतनी जल्दी थोड़ी स्टार्ट हो रही है तो उसको नेक्स्ट मंथ के अंदर रख लेते हैं, इस तरीके से। तो अभी पता नहीं है फाइनल तो, है ना। और काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट होगी, है ना। काउंसलिंग को जब डिले होगी यदि नेक्स्ट हियरिंग डेट भी आगे चली जाती है, अदरवाइज काउंसलिंग तो फिर भी देखिए इसमें ये है ना मामला कि रिजल्ट आपका दोबारा से डिक्लेयर होना है 75 स्टूडेंट्स को इंक्लूड करके, उसके बाद में इंक्लूड करके जो एनटीए रिजल्ट को
जो है MCC को सौंपेगी, है ना। MCC फिर यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करेगी काउंसलिंग के लिए, है ना। तो ये जब तक रिजल्ट को NTA नहीं दे देती है MCC को, तब तक रिजल्ट आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है उस स्टार्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट मंथ में लगभग कौन से वीक में काउंसलिंग है ना, 3rd वीक के अंदर शेड्यूल वगैरह आएगा। 3rd वीक से ही कुछ हो सकता है, बाकी 2nd वीक से तो इतनी पॉसिबिलिटी कम है ना। अगर रीनीट हुआ तो 8000 बच्चों का होगा या 75 का होगा, है ना। बात आज जो चल रही थी सारी 75 स्टूडेंट्स पर नहीं, 8000 स्टूडेंट्स पर चल रही थी। उसमें ये सारी चीज़ें हुई थी कि देखिए हमने जो डाला था सबमिशन, उसको 2nd हियरिंग डेट के अंदर चेंज कर दिया गया, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिटीशन डाली बाद में। बट यदि रीनीट होगा तो 75 स्टूडेंट्स के लिए होगा, 8000 स्टूडेंट्स के लिए नहीं होने वाला। और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि 75 स्टूडेंट्स के लिए भी रीनीट होगा, मुझे नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं, हर साल होती हैं, बट कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोबारा से रीनीट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो ज़्यादा लोड मत लीजिए, आराम से चिल कीजिए, ठीक है। 72,000 EWS राजस्थान सेमी गवर्नमेंट मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है ना। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, बिल्कुल मिल सकता है। किसी का डाउट हो कट ऑफ से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, तो आप फटाफट से पूछ लीजिए, आप सभी को रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी जो भी पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहता है, मेरे थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, वो सभी जुड़ जाएं फटाफट से, है ना। ESIC की कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा, ESIC के न्यू मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है, लास्ट ईयर की तुलना में। उसके बाद में देखिए 269 मार्क्स पे रैंक 5,36,149 है। BMS सेमी गवर्नमेंट महाराष्ट्र मिलेगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा ना, काउंसलिंग कंडक्ट करवाएं। उसके बाद में नेक्स्ट डेट बता दो दी अभी, और अपडेट के साथ मैं आपको बता दूंगा जैसे ही अभी इसका कंक्लूजन का वीडियो आप सभी को पहुंच जाएगा, तो उसमें आप सभी देख लेना। ऋतुजा आपको रिप्लाई दे दिया। उसके बाद में तवीसी 2,08,000 रैंक पर ESIC कैटेगरी कौन सी है ना, कैटेगरी साथ में लिखनी पड़ेगी तभी आपको रिप्लाई मिल पाएगा, अदरवाइज रिप्लाई मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। कैटेगरी अपनी साथ में ज़रूर लिखें ताकि रिप्लाई देने में आसानी रहे और आपको रिप्लाई मिल जाए फटाफट से, ठीक है। SC कैटेगरी है, 2,08,000 पर ESIC में नहीं जाएगा, इतना लो तो है ना कट ऑफ ESIC का। एक बार सभी लाइक ज़रूर कर दें ताकि सभी के पास नोटिफिकेशन चली जाए। लाइक सभी कर दो, है ना, ताकि सभी के पास नोटिफिकेशन चले जाए। देखिए SC का कट ऑफ ESIC के लिए जो लास्ट ईयर गया था, है ना, लास्ट ईयर 2,22,000 और ये आपको मिल गया था यहाँ पर 771, बट लास्ट राउंड के अंदर ये कट ऑफ आपकी क्लोजिंग कट ऑफ है। बाकी ये मान के चलना आपकी रैंक क्या आ रही है, 2,08,000 है, तो 2,08,000 पर आपको लास्ट राउंड के अंदर पॉसिबिलिटी रहेगी। और न्यू मेडिकल कॉलेज आ जाते हैं तो फिर आराम से मिल जाएगा, है ना। बाकी 1,70,000 1,80,000 तक 3rd राउंड तक आराम से कॉलेज आपका अलॉट हो जाएगा है। तो उसके बाद में देखिए 1,49,883 पर SC राजस्थान में नहीं मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा से आपको कॉलेज मिलेगा, रमेश चंद्र गुनकर, ठीक है। राजस्थान में कॉलेज खुल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं खुलेंगे, इस साल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है राजस्थान में कॉलेज खुलने की। ESIC के न्यू कॉलेज इस बार ऐड होंगे नेक्स्ट ईयर। इस साल लगभग 3 मेडिकल कॉलेज तो कन्फर्म मान के चलो ऐड होने हैं, है ना। इन बच्चों से रैंक पर कितना फ़र्क पड़ सकता है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा, है ना। जो कट ऑफ रेंज के अंदर है उन पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें से आपको ये बात भी चली थी, है ना, इसमें कुछ ही स्टूडेंट है, 2-4 स्टूडेंट है जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स के कम ही मार्क्स हैं ना। GSBM कानपुर मिलेगा, GSBM कानपुर 62,000 SC UP चांसेज है, बट कहीं ना कहीं फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं मिल पाएगा। BMS सेमी गवर्नमेंट आपको बता दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज कितनी रैंक तक मिलेगा जनरल में? गवर्नमेंट कॉलेज आपको जनरल कैटेगरी में आराम से मिल जाएगा। आपकी रैंक क्या है, रैंक बताएं एक बार प्लीज़ सभी, है ना। लाइक आप सभी कर दें ताकि सभी के पास नोटिफिकेशन चली जाए। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे भी,
ये लंबी चल गई हियरिंग। मैं सोच रहा था 15-20 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ डिसीजन हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा मामला, बट इतना लंबा चल गया। जनरल में देखिए 26,500 से लेकर 27,000 तक लगभग कट ऑफ रहने वाली है। 1,50,164 रैंक है। ऑटोनोमस बुलंदशहर मिल सक जाएगा क्या? ऑटोनोमस बुलंदशहर 1,50,000 पर चांसेज हैं आपके। लास्ट राउंड तक बिल्कुल करवाएं काउंसलिंग। इसके लिए अपग्रेडेशन में डाल दें, पहले जो कॉलेज मिलता है उसके बाद में। फाइनल सीट मैट्रिक्स कब तक आएगा? सीट मैट्रिक्स तो अभी थोड़ी आने वाला है। सीट मैट्रिक्स तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आने वाला है, ठीक है, वही फाइनल होता है। सरोज तिवाड़ी 1,53,200 SC राजस्थान। क्या मिलेगा? राजस्थान पर मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। ऑल इंडिया कोटा से आपको कॉलेज मिलेगा। न्यू BMS कॉलेज ओपन होंगे क्या सर? नहीं है ना, BMS के कॉलेज ओपन मुश्किल है, बाकी देखते हैं। उसके बाद में बुकीज बीच 1,55,000 SC फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड में तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। 1,55,000 पर फर्स्ट राउंड के अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दूर दूर तक पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। समीर अहमद, आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है समीर अहमद, ठीक है, आप ऐसे ही करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपका वो कमेंट ऊपर है, ऊपर से मैंने रीड आउट करना स्टार्ट नहीं किया है, नीचे से कमेंट जितने भी हैं उनको रीड आउट किया है, ठीक है। उसके बाद में फाइनल सीट मैट्रिक्स कब तक आएगी? बता दिया आपको। फाइनल सीट मैट्रिक्स के लिए जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तभी फाइनल आएगी, वही फाइनल होती है, ठीक है। BDS 401 मार्क्स है, पॉसिबल SC कैटेगरी के अंदर मिल जाएगा। BDS आराम से मिल जाएगा, 401 मार्क्स पर BDS आराम से अलॉट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट कोटा से यूपी में 1,55,000 में फर्स्ट राउंड में JMC मिलेगा क्या? थोड़ा सा मुश्किल है फर्स्ट राउंड के अंदर तो, है ना। और मिलेंगे तो न्यू मेडिकल कॉलेज जो लास्ट ईयर ओपन हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनमें से मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी, बाकी तो पॉसिबिलिटी कम है। एक बार लाइक सभी कर दो, है ना, ताकि सभी के पास नोटिफिकेशन चले जाए। तो न्यू मेडिकल कॉलेज जो लास्ट ईयर ओपन हुए उनमें से आपको मिलेगा फर्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है। कौन से राउंड में मिलेगा? लास्ट राउंड तक मिलेगा, है ना ऋतुजा, लास्ट राउंड तक जाना पड़ेगा आपको। सरोज तिवाड़ी 63,338 राजस्थान, आराम से मिल जाएगा राजस्थान में आपको, है ना। इस रैंक पर आराम से कॉलेज मिल जाएगा राजस्थान में, 23,157 पर। उसके बाद में तभी सी 2,20,000 रैंक है, कट ऑफ टू फर्स्ट राउंड ESIC में SC की फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, ठीक है। और कुछ फिक्स भी नहीं है फर्स्ट राउंड की इतनी कट ऑफ जाने वाली है SIC की, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट चलते हैं। 185 मार्क्स पर FH मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा कि 8,70,000 में लास्ट ईयर 8,20,000 पर मिला था, 8,20,000 पर मिला था, तो 8,70,000 पर मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है ना। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पर डिपेंड करता है। 443 SC महाराष्ट्र सर जी मिलेगा, 443 पर आराम से मिल जाएगा महाराष्ट्र में, कोई दिक्कत नहीं है SC कैटेगरी में। बाकी महाराष्ट्र में आपको बता देते हैं SC कैटेगरी का क्या कट ऑफ रह सकता है। एक बार सभी लाइक ज़रूर कर दें ताकि सभी के पास नोटिफिकेशन चले जाए ना। SC में लगभग 1,30,000 तक पॉसिबिलिटी है। रैंक आप साथ में लिखे हैं ना, रैंक लिखेंगे तभी आपको बता पाएंगे, अदरवाइज़ गलत कट ऑफ आपको बताई जाएगी, ठीक है, तो उसका कोई सेंस नहीं है। अभी कौन से ऐड होंगे वो फाइनल हो जाएगा तब पता चल जाएगा, सभी को पता चल जाएगा, तो कोई ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है। चलो, तो किसी का डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज़ लाइव कॉप करते। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए पूरी हियरिंग सुनी। बिल्कुल, देखो आपके लिए ही सुननी पड़ती है ना, नहीं तो मेरा तो इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो डायरेक्ट फाइनल डिसीजन सुन लेता और आपको बता देता, है ना। बट वही है, फिर उसमें देखो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी होती है, मैं भी ये सारी चीज़ें थोड़ा सा सीख रहा हूँ, है ना, क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में,
ये हाई कोर्ट के अंदर लास्ट ईयर भी सीखा था, आपकी बार भी सीखा है कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आगे काम आएंगी, है ना। पूरा एक पेज भर दिया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, ये जो लिखा है ना, ये देखो आप, जो भी डिसीजन हुआ है ना, इसमें क्या क्या मतलब क्या क्या चला है हियरिंग में, पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 26,351 527 हरियाणा में नहीं मिल पाएगा इस रैंक पर। ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिलेगा आपको, सागवान, ठीक है। 1,33,000 पर महाराष्ट्र में कॉलेज मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी है लास्ट राउंड तक चलोगे तो, है ना, ज़्यादा दूर नहीं हो। बाकी 1,30,000 तक सेफ है महाराष्ट्र में। और किसी का कोई डाउट? लास्ट ईयर 1,53,000 वो लास्ट राउंड नहीं इंक्लूड करते हम ना, जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ होती है स्टे वैकेंसी सुपर स्टे वैकेंसी राउंड की, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं ना, वो कट ऑफ नहीं होती है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगी। 1-2 स्टूडेंट्स को सीट मिल रही है तो लक फैक्टर है ना। मैं आपको बता दूं 1,90,000 तक जाएगा एससी कैटेगरी में कट ऑफ, थर्ड राउंड में 1,40,000 पे फिनिश हो रहा है, तो मतलब 1,40,000 से 1,90,000 के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सबका सिलेक्शन थोड़ी हुआ है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, है ना, धीरे धीरे समझ में आएंगी। अभी राउंड वाइज जो कट ऑफ है उस पर ध्यान दीजिए, और लास्ट में कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, क्या हुआ है, उसका पता होना चाहिए। अब आप सिर्फ डाटा को देखते हो, आपको लास्ट ईयर की जो चीज़ें वो थोड़ी पता है। 26,531 शॉर्ट फॉर्म यूज ना लीजिए, है ना, डिटेल से लिखिए सारी चीज़ें तो रिप्लाई देंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं ना। ठीक है, तो है ना, काफ़ी टाइम हो गया है और आपको अपडेट मिल जाएगी वीडियो के थ्रू। अभी बता देंगे समराइज फॉर्म में क्या हुआ है कोर्ट के अंदर, सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। तो फिलहाल लाइव को ऑफ करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉच दिस लाइव सेशन, बाकी शाम को मिलते हैं, ठीक है।